In this video, we will see various op-amp parameters. The first op-amp parameter is the input bias current. So number one op-amp parameter is input bias current. Okay. Ideally, no current should flow inside op-amp. Ideally, there is no current flowing inside op-amp, but practically, some small amount of current is flowing inside op-amp. Ideally, no current flows inside op-amp. This is 0 ampere, but practically some small amount of current flowing in the op-amp. So this is the current is IB minus, this is IB plus. Okay, so input bias current is the average of the current flowing in the inverting and non-inverting terminal. So it is the average of current flowing in inverting and non-inverting terminal. So average current we defined as input bias current. So it is given by I bias equal to IB plus IB minus divided by 2. Once again I will repeat. Ideally, no current should flow inside the op-amp. Zero current amount of current enters into this negative terminal and positive terminal because op-amp is a voltage device, voltage gain device. But practically what is happening? Ideal and practical situations are different. Practically what is happening? Some small in the range of microampere, nanoampere range, some very small current flows inside the op-amp. So we define one term called as input bias current. So we take the average of these two current and this average is called as the input bias current. Then second op-amp parameter is input offset current. Input offset current. Then again we know that ideally no current should flow inside op-amp, but practically some small current is flowing inside the op-amp. Okay, now we take the difference between these two current, magnitude of difference between these two current, and we call it as input offset current. So it is defined as it is the magnitude of difference between inverting and non-inverting terminal current. Inverting and non-inverting terminal currents. So we defined input offset current as I suffix IOS input offset current equal to magnitude. So first of all we have magnitude and then IB plus minus IB minus. So the difference and we take the magnitude and that magnitude is called as input offset current. Average is called as input bias current, difference is called as input offset current. And one note for you that I bias average is always greater than the difference. Input offset current, input bias current is greater than the input offset current. These are very small amount of current, maybe in the range of nanoampere. All these currents are very small. These are the practical currents which are flowing inside the op-amp, and it has a very small value in the range of nanoampere. Then third parameter is output offset voltage. Output offset voltage. Okay, if we are not applying any input to the op-amp, if we are not applying any input to the op-amp, that means input if we are making it ground with some resistances like this. So as my input is 0, right, my input voltages are 0. You can see here input voltages are 0, but we have the supply voltage, right, plus VCC minus VEE. My input voltages are 0, but
supply voltages are present. Okay, ideally what should happen, if my input voltages are 0, if my input voltages are 0 volt, then output should also be 0 volt, right? Output should also be 0 volt. But what is happening, there is some output present at the, some voltage is present at the output, and that voltage is nothing but output offset voltage. So you can define output offset voltage as, in the presence of supply voltage, in the presence of supply voltage, when input voltages are 0, still some voltage is present at output called as output offset voltage. So that voltage is called as output offset voltage. Again, its value is very small, in the range of millivolt. ओके, आइडियल केस में क्या होगा, जब आपका इनपुट जीरो है, जब आपका इनपुट वोल्टेज जीरो है, आप कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं कर रहे, तो आपका आउटपुट भी क्या होना चाहिए, जीरो. बट प्रैक्टिकली क्या हो रहा, even though your input is 0, but still some voltage is present at the output, and that output is called as output offset voltage. Now for this circuit, if this resistance is R1, this resistance is RF, then output offset voltage is given by that formula, output offset voltage equal to 1 plus RF by R1 into VIOS. Okay, then next parameter is input offset voltage. Fourth op-amp parameter is input offset voltage. Okay, so how you will define input offset voltage? So what we are doing, we are applying some voltage at the input side. We apply some voltage at the input side to make output offset voltage 0 volt, and that voltage is called as input offset voltage. ये actually हमारा input signal नहीं है. Input offset voltage is not our input signal, but we apply the voltage at the input side to make the unwanted voltage which is present at the output as 0 volt. So how you will define this? To make output offset voltage, to make output offset voltage 0 volt, we apply input voltage, and that voltage is, that input voltage is इनपुट ऑफसेट वोल्टेज. ठीक है, फिर से एक बार, पहले आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज समझो. आपका इनपुट जीरो है, आपका इनपुट वोल्टेज क्या है, जीरो. आपने कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं किए, बट कुछ आउटपुट में एक वोल्टेज प्रेजेंट रहेगा. वो आउटपुट को हम बोलते, वो वोल्टेज को हम बोलते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज. ये किसके वजह से प्रेजेंट रहता, ड्यू टू द सम मिसमैच ऑफ ट्रांजिस्टर. व्हाई दिस वोल्टेज इज एग्जिस्टिंग, बिकॉज ऑफ द मिसमैच ऑफ transistor. Even though we take the same material for the transistor, all resistances we take for the same value, but still some voltage is present at the output, there is some mismatch, and that voltage is the output offset voltage. Now अब इस आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जो आ रहा आपका, उसको जीरो करने के लिए, उसको नलीफाई करने के लिए आप इनपुट में कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उस वोल्टेज को हम बोलेंगे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज. ओके, और उसको भी इसी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इक्वल टू, by just transferring this term over here, you can get the formula to calculate input offset voltage. Then fifth parameter is CMRR. Okay, before we go for the CMRR, just we have seen the definition of differential amplifier. differential amplifier में क्या था, so this is a differential amplifier. It is amplifying the difference between two signal.
V2 V1, it is amplifying the difference between two input signal. Output equal to gain times difference between two input, that means output equal to AD times V2 minus V1 और V1 minus V2, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल माइनस नेगेटिव टर्मिनल आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डिफरेंस एम्पलीफायर। बट प्रैक्टिकली and this is the differential gain, AD is the differential gain, but practically what is happening, we have one common mode signal, मतलब जो कि एक सिग्नल है जो कि दोनों टर्मिनल्स को कॉमन है, it is common to both the V1 and V2, that means it is appearing at both the terminals, inverting and non-inverting terminal, common voltage signal, common mode signal, ओके। एंड उसके वजह से भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर आपका आउटपुट, डिफरेंशियल एम्पलीफायर उस कॉमन मोड सिग्नल को भी एम्पलीफाई करता। सो वी हैव टोटल आउटपुट इक्वल टू, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट दैट कॉमन मोड सिग्नल। सो कॉमन मोड सिग्नल इज VC, C is indicating common mode signal and it is nothing but V1 plus V2 divided by 2. So this is the common mode signal which is appearing at both the terminals of op-amp, V1 plus V2 upon 2. Okay, so this is the common mode signal appearing at the input. अब ये भी एम्पलीफाई होगा because it is amplifier, क्या है ये, डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, right? So this signal will also get amplified, common mode signal also gets amplified. So your total output equal to AD V1 minus V2 plus AC into VC, and VC is nothing but V1 plus V2 upon 2. So I can write this as V1 minus V2 plus AC times V1 plus V2 upon 2. So this is the unwanted common mode signal. An example of common mode signal is noise. कौन सा कॉमन मोड सिग्नल आ सकता है, जो कि नॉइज दोनों टर्मिनल पे अपियर होगा एक साथ और वो एम्पलीफाई हो जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए, ओके। देन AC is the common mode gain, AD is the differential gain. I will write here, okay, I will write it afterwards. तो ये एबिलिटी ऑप एम्प की कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करने के लिए, जो नॉइज आ रहा दोनों टर्मिनल पे जो कि नहीं चाहिए हमको, उसको रिजेक्ट करने के लिए एक एबिलिटी रहती है, उस एबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं CMRR. सो CMRR, हाउ यू विल डिफाइन, इट इज द एबिलिटी टू रिजेक्ट कॉमन मोड सिग्नल। तो ये एक एबिलिटी डिफाइन करता कि जो कि रिजेक्ट करेगा कॉमन मोड सिग्नल को। आपको नॉइज चाहिए कि कभी नहीं, हमको नॉइज कभी नहीं चाहिए, तो इसलिए हम एक CMRR डिफाइन करते हैं जो कि एबिलिटी बताता कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करने की, ओके। एंड इट्स डेफिनेशन इज, इट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंशियल गेन AD to common mode gain AC. Now give one thought कि आपका CMRR ज्यादा रहना चाहिए या कम रहना चाहिए। CMRR क्या है, एबिलिटी है टू रिजेक्ट कॉमन मोड सिग्नल। अगर CMRR ज्यादा होगा तो आप काफी अच्छी तरीके से कॉमन मोड सिग्नल जो कि नॉइज रहता उसको आप रिजेक्ट कर सकते। सो ऑलवेज इट्स वैल्यू शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, CMRR शुड बी as high as possible, okay. And we have defined CMRR as CMRR equal to रेशियो AD अपॉन AC। बट ये AD गेन है, AC गेन है, तो ये क्या हो गया आपका यूनिटलेस क्वांटिटी हो गया,
but CMRR has some unit. Okay, we cannot keep CMRR as a unitless, we keep with some unit. So we define CMRR in dB as CMRR in dB. So CMRR equal to, अब ये क्या है, differential gain. ADAC is what? Differential gain, and these are voltage gain. Whenever we have voltage gain, we take 20 log. When we want to express it in dB, so we take 20 log. If it is a voltage current, we take 20 log. If it is a power, we take 10 log. वोल्टेज करंट के लिए हम 20 लॉग लेते हैं, पावर के लिए हम 10 लॉग लेते हैं. ओके, so CMRR equal to 20 log AD by AC. Again, this formula can be written as 20 log AD minus 20 log AC. So these are the formulas to calculate CMRR. एक बार मैं फिर से रिपीट करता कंसेप्ट ऑफ CMRR. ओके, we have seen the differential amplifier. So differential amplifier, this is the ideal equation. V0 equal to AD V1 minus V2 or V2 minus V1. Positive terminal minus negative terminal, right? So difference of the inputs. So this is the ideal equation. This is the ideal equation. But practically what is happening? Some common signal, common mode signal is appearing at both the terminals. मैंने आपको बताया common mode signal कौन सा हो सकता है? Noise हो सकता है, right? And it is given by V1 plus V2 upon 2. This common mode signal is V1 plus V2 upon 2. So अब आपका total output क्या होगा? Due to the AD differential gain as well as due to common mode gain. So total output is AD V1 minus V2 plus AC V1 plus V2 upon 2. This is due to the common mode signal. This factor of voltage is coming due to the common mode signal. Then CMRR is what? It is the ability to reject common mode signal. Example is noise. Then how we define? It is the ratio of differential gain to common mode gain. CMRR should always be high as possible. So it is a unitless. In dB we express it at 20 log AD by AC. Okay. Now next parameter is slew rate. Sixth parameter is slew rate. Okay. Then how you will define it? It is the rate of change of output. It is the rate of change of output voltage. Or you can say that it is the rate of change of output voltage with respect to time. So rate of change मतलब क्या? Derivative. So slew rate equal to dV0 output voltage, ठीक है, with respect to time, dV0 by dt. It is the rate of change of output voltage with respect to time, and its unit is generally, this is volt and this is microsecond. Volt, time is generally in microsecond. Output voltage in volt, time in microsecond. dV0 by dt. Volt per microsecond, we express slew rate as volt per microsecond. Now what actually slew rate is? Okay. तो एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता. सपोज यू हैव द इनपुट सिग्नल विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर वेव. द इनपुट सिग्नल इज परफेक्ट square wave. That means there is no slope here. Okay, this is my input signal. So input is a perfect square wave. Now if your slew rate is low, if the value of slew rate is low, अगर आपका slew rate क्या है, लेस है. ओके, अब स्लीव रेट क्या रहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विथ टाइम. रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है, राइट. सो यहाँ पे आपका जैसे इनपुट परफेक्ट स्क्वायर वेव, आउटपुट भी क्या आना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर वेव. बट अगर आपका स्लीव रेट लेस है, अगर आपका स्लीव रेट कम है, तो क्या होगा? आउटपुट में जो स्क्वायर वेव है उसके आउटपुट में टिल्ट दिखेगा. क्या दिखेगा? टिल्ट. और टिल्ट मतलब ये क्या है? स्लोप. एक स्लोप दिखेगा. आपको आउटपुट चाहिए परफेक्ट. परफेक्ट दैट मीन्स इट इज गोइंग स्ट्रेट अवे लाइक दिस. ऐसा जो जैसा स्ट्रेट जा रहा वैसे ही चाहिए. बट अगर आपका स्लीव रेट कम रहा तो ये ऐसा टिल्ट आएगा. ओके, तो दिस टिल्ट वी डिफाइंड एज स्लीव रेट.
So this is the slope is nothing but dv0 by dt. This slope is nothing but dv0 by dt. And if your slew rate is high, अगर आपका slew rate high है, slew rate is high, then you will get the perfect square wave. So there will not be any tilt. Okay, so that is the importance of slew rate. It decides the frequency, how much high frequency you can apply as an input. इनपुट की आपकी कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो पैरामीटर डिसाइड करने के लिए आप स्लीव रेट का यूज़ करते. सो यू कैन ऑल्सो से दैट इट डिसाइड्स इनपुट सिग्नल frequency, that how much high frequency signal we can apply to the input, that is decided by the slew rate. So it is a frequency parameter, we can say frequency performance parameter. I hope it is clear. It is the slope of output voltage with respect to time. अगर स्लीव रेट कम रहा तो आपका जो आउटपुट परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए था वो परफेक्ट नहीं आएगा, कुछ टिल्ट आएगा. आपको ये टिल्ट नहीं चाहिए, ऐसा टाइप का टिल्ट नहीं चाहिए. आपका इनपुट परफेक्ट स्क्वायर वेव है तो आउटपुट भी आपका परफेक्ट स्क्वायर वेव चाहिए. अगर आपका स्लीव रेट ज़्यादा रहा तो वो टिल्ट नहीं दिखेगा. ठीक है. इन ड्यूरिंग प्रैक्टिकल आवर्स वी कैन हैव दिस एक्सप्लेनेशन. Okay, so this is about slew rate. Again, one of the important point, its unit is volt per microsecond. Okay, also you can say that it is the maximum frequency input signal can apply without output getting distorted. It is the maximum, it decides the maximum frequency input signal can have without getting output waveform distorted. One more formula is there for slew rate. So slew rate equal to 2 pi fm into Vm. Okay, so this is another formula. This Fm is the maximum frequency of input signal and this Vm is the peak voltage of output. Vm is the peak voltage of output. Fm is the maximum input frequency and Vm is the peak output voltage. Okay, and unit क्या है slew rate का? Volt per microsecond. Okay, so just quickly we will revise all the 6 parameters. First parameter is input bias current. So average of current entering into inverting and non-inverting terminal. ये जो दो करंट है IB माइनस IB प्लस, इनका एवरेज को हम बोलते हैं इनपुट बायस करंट. सेकंड पैरामीटर इज इनपुट ऑफसेट करंट. ये करंट एक्चुअली नहीं चाहिए हमको, बट ये कुछ नैनो एम्पियर में करंट ऑप एम्प में एग्जिस्ट करते. सो इट इज द डिफरेंस IB माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, IB माइनस माइनस सॉरी IB प्लस माइनस IB माइनस. इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस. दैट मीन्स IB प्लस माइनस IB माइनस. ये हो गया आपका इनपुट ऑफसेट करंट. तीसरा पैरामीटर है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज. इनपुट 0 वोल्ट, इनपुट इक्वल टू 0 वोल्ट. इनपुट सिग्नल जो कि हम इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं, आउटपुट शुड ऑल्सो बी 0 वोल्ट. दिस इज द आइडियल कंडीशन. बट प्रैक्टिकली इनपुट 0 वोल्ट, आउटपुट इज नॉट इक्वल टू 0 वोल्ट. ये जो वोल्टेज रहता है इसको हम बोलते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज. फोर्थ पैरामीटर क्या है? आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, सॉरी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज. फोर्थ पैरामीटर इज इनपुट ऑफसेट वोल्टेज. VOOS आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को जीरो करने के लिए कुछ इनपुट में अपन वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उस वोल्टेज को हम बोलेंगे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज. देन फिफ्थ इज CMRR, ability to reject common mode signal. Then CMRR equal to
डी AD by AC, a common mode gain because the common mode signal is appearing at the input. CMRR should be as high as possible. dB 20 log AD by AC. Log A by B is log A minus log B. So 20 log AD minus 20 log AC. And sixth is slew rate. It decides the maximum input frequency which we can apply, right? And it is nothing but rate of change of output voltage with respect to time, and its unit is volt per microsecond. We express slew rate as volt per microsecond. Then again, slew rate should also be as high as possible. It should also be as high as possible. अगर आपका slew rate सबसे ज़्यादा है, अगर आप IC परचेस करने गए तो आप देखेंगे कि स्लीव रेट कम है या ज़्यादा है. अगर स्लीव रेट ज़्यादा है इसका मतलब वो आउटपुट आप ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट आप अप्लाई कर सकते हैं और आउटपुट आपका प्रॉपर रहेगा, उसमें डिस्टॉर्शन नहीं रहेगा. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ऑल दिस 6 पैरामीटर्स. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर. थैंक यू.